Hello friends, welcome back. Let's move forward by understanding little more about verbs. Today we'll be studying verb as regular verb or irregular verb. Fine. Verb can be divided in this form also as regular verb and irregular verb. Now this is quite easy. Basically we call regular verb to those in which we just need D. We just need D or ED to change into past tense. To change into past. So like whenever we change a verb into past form and we only need D or ED. So that is like these kind of verbs are called as regular verb. Fine. Like for example, if you write stop, right? So stop can be changed into stopped. Stop can be changed into stopped, or simply you have walk. So walk can be changed into walked. Fine. Walk can be changed into walk. So whenever you just need D, ED or D, that is regular verb. Fine, clear. Now what are irregular verb? Irregular verb means when you change them into past tense. When you change into past tense, the whole new word, the word changes. For example, if you write eat, so eat changes to ate. The second form of eat is ate, and third form goes as eaten. Fine. Eat, ate, eaten. Similarly, write. Write. The second form of write is wrote, and third form is written. Fine. Third form is written. But when you see here, second form V2, that is second form. Second form is also ed, and third form is also ed. Third form is also here ed. Fine. And walk. So this is how you can differentiate between regular and irregular. Here, like eat, ate, eaten, like write, wrote, written, or like steal, 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 stole, stole, and stolen, stolen, single, steal, stole, stolen. So this way, steal, stole, and stolen. Fine. So this is regular and irregular. Let's understand few more differences of verb. Like this, we have studied regular, irregular. Before that, we discussed about finite, non-finite. We have also discussed about verb as action verb, helping verb, model verbs. We discussed everything about all these in detail. Let's see some more differentiation. Like we can also divide verb. Yeah, causative verb, causative, causative verb. Now, in causative verb, the action is done through with the help of somebody else. When actions is done through through someone to someone else. Fine. In that condition, such verbs are called as causative verb. Fine. Some of the examples of causative verbs are like let. Let is common causative verb. Then we have make. We have make. Second form of make is made. Second form is made. Similarly, get and got. Get and got. Similarly, have, and had. So these words, they are also used as causative verb. For example, I write made I made my shirt I made my shirt stitched. Now you can see, friend, that I made my shirt stitched. That means someone else involvement is there. है ना कि मैंने किसी से अपनी शर्ट स्टिच करवाई, तो ये मेड माई शर्ट स्टिच किसी और से करवाया, है ना. सिमिलरली वी had we yeah we had our dinner we had our dinner prepared. वी हैड आवर डिनर प्रिपेयर्ड. इसका क्या मतलब है कि हमने हमारा डिनर तैयार करवाया, किसी और से करवाया, है ना. किसी और का जब इन्वॉल्वमेंट आ जाता है तो वो हमारा पॉजिटिव वर्ब हो जाता है. सिमिलरली एक सेंटेंस है शी मेड मी हैप्पी. शी मेड मी हैप्पी मतलब मेरा जो खुश होने का कारण है
वो कोई और है ना, किसी और की वजह से मैं खुश हो गया, है ना। वैसे ही वन मोर एग्जाम्पल, दे had the वर्क दे हैड द वर्क डन, मतलब उसमें एक तो हम बोलते हैं कि दे डिड द वर्क, है ना, या दे हैड कंप्लीटेड द वर्क, मतलब उन्होंने खुद ने किया। दूसरा, अगर ये सेंटेंस हम पढ़ेंगे दे हैड द वर्क डन, इसका मीनिंग आ रहा है कि वो वर्क उन्होंने करवाया, मतलब किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर है। तो थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट वाले जो सेंटेंस होते हैं वो बेसिकली उसमें ये जो हैव, हैड, मेड, मेक, लेट, इस तरह के जो वर्ड होते हैं वो आपके पॉजिटिव वर्ब कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? पॉजिटिव। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे ही लेट ही लेट मी ही लेट मी गो। अब इसमें आप देखो ही लेट मी गो, ही लेट मी गो मतलब मेरा जो जाना है वो किसी और के कारण, किसी और की बदौलत, किसी और की वजह से हुआ। अगेन इसमें भी थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। तो इस तरह की जो सेंटेंस है जिसमें एक आपका जो एक्शन है वो किसी और के हेल्प से या किसी और के थ्रू करवाया जा रहा है, इस तरह के जो आपके वर्ब्स होते हैं फ्रेंड्स वो आपके पॉजिटिव वर्ब्स होते हैं। आई होप इट इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन to some more types of verbs. Fine. So we actually have covered almost all different types of verb in which we can differentiate. है ना? We have tried our best to understand, to get all the concepts of verb clear. Let's see. Then we can talk about phrasal verbs. Fine. We can talk about phrasal verb. Now this is also very important, friend. Phrasal verb. Now phrasal verbs actually they are set. They are of set of two words. Set of two words. Fine. So first word is like verb. Word is like verb, and second word can be your preposition. Second word can be preposition, or it can be an adverb. It can be a preposition or it can be an adverb. And the new word, that is the new word which is formed, has a different meaning. Has a different meaning than द सिंगल वर्ब। मतलब जो सिंगल वर्ब होता है उससे जो आपका जो फ्रेजल वर्ड जो बनता है, फ्रेजल वर्ब जो बनता है, दोनों के मीनिंग में डिफरेंस होता है। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ वन एग्जाम्पल, है ना। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने लिखा, शी लुक्ड आफ्टर हर सिस्टर, है ना, कि शी लुक्ड आफ्टर हर सिस्टर। क्या मीनिंग है इसका? कि उसने जो है अपनी सिस्टर का ध्यान दिया। अब आप इसमें देखो लुक्ड आफ्टर, है ना, लुक्ड आफ्टर इज योर फ्रेजल वर्ब। व्हाट इज इट? फ्रेजल वर्ब। नाउ हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम लुक? देखो लुक जो है, द वर्ड लुक्ड, उसका मीनिंग अलग होता है। लुक्ड का मतलब होता है देखना, है ना, टू सी। लुक्ड का मतलब क्या होता है? टू सी। लेकिन लुक्ड आफ्टर जो आपका फ्रेजल वर्ब फॉर्म हुआ, लुक्ड आफ्टर, इसका मीनिंग होता है टू टेक, केयर, है ना। तो ऐसे डिफरेंट जो फ्रेजल वर्ब्स होते हैं वो डिफरेंट मीनिंग देते हैं। ऐसा बहुत सारा लिस्ट है फ्रेजल वर्ब की, वो आप लोग थोड़ा सा नेट से भी निकाल कर स्टडी करो कि फ्रेजल वर्ब बहुत ही अच्छे अच्छे मजेदार फ्रेजल वर्ब भी होते हैं, है ना, जिसके अंदर एकदम टोटली नया मीनिंग निकल के आता है। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। आई होप ये क्लियर है लुक्ड और लुक्ड आफ्टर का डिफरेंस। ठीक है, लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स ऑफ फ्रेजल वर्ब। Yeah, so next we have like please, let me wrap this, because we are studying phrasal verb. Please turn off, the TV. I'm writing the sentences. You just find out the phrasal verb and try to understand its meaning also. And then P
gave up smoking. He gave up smoking. Fourth one we have is please pick up. Please pick up my phone. Please pick up my phone. Next is fifth is he set out. He set out for the journey. Set out for the journey. One more. She gave in to the request. Fine. So you have a group of phrasal verb. First one is please turn off. So turn off is your phrasal verb. Next we have is gave up. Gave up is phrasal verb. Next is pick up. Next is set out. Next is get in. Gave in. How they are different? See how the meaning changes. जैसे first वाला आप देखो turn off the TV. तो turn का मतलब तो कुछ और होता है. Turn का मतलब मुड़ना. लेकिन turn off का मतलब क्या होता है? Turn off का मतलब होता है switch off. स्विच ऑफ या बंद करना. अगेन स्विच ऑफ भी आपका एक फ्रेजल वर्ब है ना. टू लेट इट टू कीप इट ऑफ, बंद करना. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है गेव अप. गेव अप स्मोकिंग मतलब लीव. टू गिव अप समथिंग मीन्स टू लीव, है ना, छोड़ देना, त्याग देना. छोड़ देना, त्याग देना, वो गेव अप हो गया. नेक्स्ट है पिकअप. प्लीज पिकअप. पिकअप का मतलब होता है फोन उठाना, है ना. टू पिक, टू उठाना. ठीक है, कॉल उठाना. नेक्स्ट हमारे पास है सेट आउट. ही सेट आउट फॉर अ जर्नी. सेट आउट फॉर अ जर्नी मतलब टू स्टार्ट, टू बिगिन, है ना. टू बिगिन, to begin for journey. Then gave in. Gave in to the request means accepted. She gave in to the request means accepted the requested. She accepted the requested. ठीक है. I hope phrasal verbs you got an idea what are phrasal verbs, है ना. These are also there. This is I think this lecture is an end to our verb section. Now will be I'll see you with adverb.